सेंट्रो स्पोर्ट न्यू वाला। मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग पूरा कैसे निकालेंगे असम्बल। तो मैं एयरबैग निकाल के रखा हूँ इधर से। अभी अपने को पहले ये निकालने का स्टीयरिंग का व्हील के सॉकेट भी मैंने निकाल दिया है। वाइट वाला सॉकेट निकालना रहता है, बाकी ये रहने दो। के बाद में आपको ये नट खोलना है, 21 नंबर का नट खोलेंगे इसकी CMM का। के बाद में आगे आपको दिखाता, ठीक है। तो मैंने इसको लूज़ कर लिया, अभी तो ढीला हो गया है। हमारा स्टीयरिंग अभी भी सीधा है, ठीक है। हमने ऐसा मार्कर भी करके रखा है। उसके बाद में हमने इधर अपना टायर भी सीधा रखा है, देखो दिख रहा है, देखो पूरा टायर सीधा करके रखा है। और नीचे का दिखाता हूँ, नीचे का अभी अपने को खुलने के लिए तकलीफ देगा, तो इसकी वजह से हम अब स्टीयरिंग लॉक नहीं करेंगे। पहले इसको यहाँ पे ऐसा घुमा लेंगे स्टीयरिंग। अभी हमारा स्टीयरिंग लॉक हो गया, तो हम चाबी से पहले इसको ऐसा करेंगे, तो लॉक खोल लेंगे। उसके बाद में ये पोजीशन पे ले लेंगे, ये पोजीशन पे। उसके बाद में हमारा बोल्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल्ट खोल के पहले दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल्ट खोल रहा हूँ।